Okay, guys. So we have Dr. Sharvari Abhyankar with us. Sharvari is a pure Ayurvedic practitioner in South Mumbai, and she is also my prenatal yoga teacher. Sharvari has done her MA in Yoga Shastra, and not just that, she's a university topper and a gold medalist. She's the founder of Dr. Sharvari's Yoga Ayatan, which conducts yoga trainings for common people as well as therapy sessions for various ailments like hypertension, diabetes, back pain, and other lifestyle disorders. Dr. Sharvari nurtures would-be mothers by teaching them pregnancy yoga, and she is also a Garbha Sanskar specialist. She is a faculty for anatomy and physiology at various institutions, including Yoga Vidya Niketan, Yoga Sadhana Mandir, Atma Bodh Institute for Yoga and Naturopathy, and Somaya College. Sharvari is also a corporate trainer and has conducted more than 100 sessions on yoga and wellness and women's wellness at reputed organizations. In my opinion, she is an extremely giving teacher. It's not like she keeps the knowledge to herself, but she has also given it to all of us very, very generously and liberally. And that is probably why we have turned out to be such good prenatal yoga teachers. So there are more than 250 yoga teachers that have been trained under her till date. So welcome, Sharvari, and we are here to speak about managing menopause. So my first question to you is, how does menopause happen? I mean, it's a completely natural process that women undergo, but right now it is so happening that women are getting menopause as early as 34, and when they're supposed to be getting it at the age of I think post 50 is 45 to 50. Yeah, 45, 50, Yes. So how do we know that we are approaching menopause? Are there any symptoms? And what exactly happens when a woman undergoes menopause? Right. Okay. So thank you. First of all, thank you very much, Priya, for inviting me. So let's directly go to our points. Menopause, right? You just asked that what are the stages of menopause or how it occurs in our body or in our life. So as you already said, that this menopause is the most natural event in females' life, right? Why this menopause is there? Because we are menstruating females, right? Since menstruation there, menopause will be there. So just like this menstruation is a very natural event, or it is a very natural monthly event in our life, just like that, this menopause is also natural, right? Now when we get first period at around our 11, 12 or 13 years of our age, right? So that first period is actually called as menarche as per anatomy or biology. Okay, first period is called menarche. So from that day, we generally get our periods regularly every month, except our pregnancy, or maybe because of some hormonal imbalance or some disorders or some medicine effect is there. So in such cases, we don't get periods, but otherwise these periods are pretty regular with every month. And when these periods completely stop, we say that menopause is there, right? So up from menarche to menopause, whatever that lifespan is there, that is called as a reproductive lifespan of that female, because during this period only we reproduce. Okay, there is no reproduction before menarche and there is no reproduction after menopause. Am I right? Okay, so menarche is natural, menopause is also natural. Okay, for menarche we generally feel that suddenly this period is happening, or there is a period, or I'm feeling, or I'm menstruating suddenly. So we generally feel that that is suddenly, but it is not a sudden event. Right. Okay, nature prepares that female body for that menarche maybe from 3 to 4 years before she actually gets menarche, right? तो सपोज अगर किसी छोटी लड़की को 12-13 साल में अगर menarche या तो फर्स्ट पीरियड आ रहे हैं, दैट मीन्स नेचर इज प्रिपेयरिंग हर, शायद 9-10 साल से वो प्रिपरेशन उसकी बॉडी में शुरू हो जाता है, right? Okay, so what are those preparations? Like her pituitary gland starts secreting some hormones, okay, and then the ovary in that
female body starts reacting to those pituitary hormones, and because of this reaction, action reaction process in her body changes, right? There is a more fat deposition on particular part of that female body, जैसे कि breast enlargement हो जाती है, hips enlargement हो जाती है, and of course all these changes are not done overnight, right? They don't happen, so they take time. So just like that, कि menarche is not the overnight event or not a sudden event. So just like that, menopause is also not a sudden event, right? Okay. So for menopause also nature prepares that female body, that lady for that menopause. ये overnight की बात नहीं है. Okay. So ये जो phases है और ये जो preparation body की चलती रहती है, they can be divided into 4 or 3 to 4 stages. Okay. So we have to pass all these stages till we reach this menopause. So what are these stages? So the very first thing is like pre-menopause, that we can consider that before our 40 we are in this pre-menopause stage. That means we get our periods very regularly. Okay, we ovulate, we will be able to reproduce also. Pregnancy can happen before 40 years of age. Okay, so this is called as pre-menopause. वहां पर सब ठीक रहता है, regular periods है, female is feeling good, she is energetic, blah blah blah, everything. Okay, her hair is good, her skin is good, she is looking very beautiful, her sex drive is really very good, etc etc. Okay, now what happens as she crosses her 40? Okay, so when she enters into her 40, so this 40 to 45 age, okay, or this 5 to 7 years, I am अभी ये जो for 5 years है, this won't be exact in every lady. Okay, तो किसी का शायद 35 से स्टार्ट हो सकता है, किसी का 37 से स्टार्ट होता है, but by and large we can assume that this perimenopausal stage starts right from the 40. Okay, so from 40 to 45 46, that 5 to 7 years का जो span है, that is called as perimenopausal era or perimenopausal stage. अब इसमें क्या होता है कि पहले जैसे हम बहुत अच्छे से रेगुलरली ब्लीड करते हैं, and we get this period bleeding for maybe for 3 days or 5 days. Okay, we bleed really very good amount of blood, etc etc. Now once she enters into 40, उसका जो periods are pretty regular here. Okay, लेकिन जो वो पहले 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए उसका ब्लीडिंग चलता था, अब वो ब्लीडिंग में 4 डेज का जो स्पैन रहता है वो कम होना शुरू हो जाता है. लाइक शी ब्लीड्स ओनली फॉर 2 days or 3 days. She can see that there is a quite what noticeable reduction in her bleeding. Okay, तो ये सब क्यों होता है? Because there is a little fall of hormones in her body. Which hormones are responsible for our female body? Basically estrogen and progesterone. ओके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन धीरे धीरे बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं, और ये ओवरनाइट नहीं होता, इसके लिए 5-7 साल लगते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज पेरीमेनोपॉजल एज, राइट? अब इसमें ये चेंजेस देखते हैं हम कि पीरियड्स रेगुलर है लेकिन ब्लीडिंग कम हो रहा है. समटाइम्स दैट फीमेल फील्स कि उसके थोड़े से बोन्स थोड़े एक करने लगे, पहले जैसा स्टेमिना एनर्जी नहीं रही है. ओके, शी कैन फील दिस हेयर लॉस, नॉट ट्रिमेंडस हेयर लॉस, बट यस शी कैन से कि पहले बाल थोड़े ज्यादा अच्छे थे, अब थोड़े कम होने लगे हैं. स्किन में थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं, थोड़ा पफिनेस फेस पे दिखाई देना शुरू होता है, थोड़े थोड़े पिगमेंटेशंस आने शुरू हो जाते हैं, and we generally call it as this is now aging once I enter this 40s. Okay, so all these changes are natural and we have to actually accept all these changes gracefully. Okay, right? So this is called as perimenopausal age, जब हमारी बॉडी मेनोपॉज के लिए प्रिपेयर कर रही है, right? And this is all because of the fall in your estrogen and progesterone hormone. These hormones are secreted by our ovary. तो ओवरी का ये सिक्रेशन, उसका काम अब धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाता है. And after that stage you actually enter into this menopausal stage. मतलब आपके पीरियड्स अब इरेग्युलर होना शुरू हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने पीरियड्स आते नहीं है, अचानक से 6 महीने के बाद आते हैं. 6 महीने के बाद आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है. समटाइम्स किसी फीमेल को ज्यादा ब्लीडिंग होता ही नहीं है, स्कैंटी हो जाते हैं. तो ऐसे पीरियड्स इरेग्युलर आते 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 एक दिन पूरी 1 महीने में पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं, और उसके बाद 12 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते हैं. ओके, तो ये जो एज है या तो ये जो लाइफ स्पैन है, दैट इज अराउंड 45 to 55. ओके, any female can get this menopausal. This is called as the menopausal stage when you get complete cessation of your periods. ओके, तो ये 45 से लेकर 55 तक कभी भी आ सकता है.
Some lady can achieve her menopause at around 46, 47, 50, 52, 53, up to 55. It is called as natural. Okay, right? तो ये ऐसी इरेग्युलरिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसी के साथ कुछ जो सिम्टम्स जो पहले थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे, अब वो थोड़े से ग्रेव होने लगते हैं, जैसे कि ट्रिमेंडस हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन काफी ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो ग्लो जो रहता है स्किन का वो चला जाता है, राइट? ओके, एट द सेम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग दिस हॉट फ्लशेस, अचानक से गरम गरम महसूस होता है आपके गाल, और आपका पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लश, बट इट इज बिकॉज ऑफ द हॉट फ्लश. ओके, जिसमें आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, अचानक से आपको स्वेटिंग स्वेटिंग लगने लगता है. ओके, ऑल दिस सिम्टम्स आर बिकमिंग सीवियर और सीरियस डे बाय डे, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर मेनोपॉज. तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपका मेनोपॉज अराउंड द कॉर्नर है, शायद 1 साल में, या तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल में वो आ जाता है. आ जाता है मतलब आपके पीरियड्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं. ओके, राइट? अब कंप्लीट मेनोपॉज अचीव हुआ ये हम कब बोलेंगे? जब हमें पीरियड्स नहीं आ रहे कंटिन्यूअसली फॉर 12 months. Okay, if the lady is not experiencing periods, menstrual bleeding consecutively, continuously for 12 months, so at the end of 12 months, yes, we can assume that we have achieved that stage of menopause, right? So that is called as menopausal stage, 45 to 55 years, right? And after 55, once you achieve this menopause, then permanently you will be in that post-menopausal phase, right? ओके, तो ये जो सारे सिम्टम्स हम बात कर रहे थे कि हॉट फ्लशेस है या तो सीवियर हेयर फॉल वगैरह है, ये जो सारे सिम्टम्स है ना, ये मेनोपॉज के अराउंड रहते हैं. ओके, और जब तक आपको मेनोपॉज कंप्लीट नहीं आता, आपको ये सीवियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं. वंस यू अचीव दिस मेनोपॉज आफ्टर 1 year और 1.5 year, ऑल दिस सिम्टम्स जनरली वैनिशेस. ओके, और फिर बाद में वो लेडी स्टेबल हो जाती है, उसकी बॉडी और उसका माइंड उस मेनोपॉज को एक्सेप्ट कर लेता है. Okay, and then she remained that postmenopausal phase till the end of her life. Okay, right? So but then does the shine and the hair and the skin come back or no? yeah, they certainly no, yes, क्योंकि हमें पता है कि जो पहले का हमारा जो विगर था या तो ब्यूटी थी, of course we are going to lose that beauty once we age, right? So nobody should accept that they can be they will remain forever young, right? And after all, body है, body हमेशा, बॉडी का जो संस्कृत में बॉडी के लिए वर्ड है शरीर बोलते हैं, जो हम मराठी और हिंदी में भी यूज करते हैं, लेकिन शरीर इज द प्रॉपर संस्कृत वर्ड. उसकी डेफिनेशन ही है शीर्यते इति शरीरः. शीर्यते का मीनिंग ही है कि उसका डीजनरेशन हो रहा है, राइट? ओके, सो शरीर ही है तो उसका धर्म ही है, उसका स्वभाव ही है कि वो डीजनरेशन की तरफ ही जा रहा है. So all these changes we should accept gracefully and assume कि जैसे हमने हमारा यूथ और हमारा विगर एंजॉय किया था और एक्सेप्ट भी किया था अच्छे से, तो उसी के साथ हमें ये मेनोपॉज भी अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, right? Sharvari, can you tell me if the menopause tends to come earlier these days? Can it come at the age of 30, 35, not 30, but maybe 35 or 38? Yeah. Are women experiencing, because it is said that these days girls are getting their periods early and also getting their menopause early. So yes, nowadays this trend we can see that girls are getting menarche early, right from their age of 6 or 7. So little girls, they are so young girls, they are getting periods, which is actually a really very unfortunate. They are really very innocent kids and still they are getting this menstruation. And yes, menopause is also setting early in female body. So there are multiple reasons behind this early menarche and early menopause. Okay, now let me tell you why this menarche or the first period is getting early day by day. The very important reason behind this, there are really very early exposure of all these kids' brain to multiple things. Okay, there is an early development of their pituitary gland. See, all these young kids, अगर अब प्रिया आप तो मुझसे बहुत छोटी हो, but if I remember me myself at around 6 or 7 years old, I was really yedi.
लिटरली आपके लैंग्वेज में बोलती येड़ी। वो सो इनोसेंट, मतलब पता ही नहीं था कुछ क्या चल रहा है। वी वर सो बिजी इन आवर ओन लाइफ कि बस स्कूल जाना है, I think, हवा yeah, खेलना है। till 12 or 13 years, we were हाँ, like completely clueless and completely clueless. Okay, we were so I won't say that these little kids are not innocent, but see that there is a difference in every generation. Okay, they are getting early exposure to everything, yeah. including this mobile, laptop or internet or whatever you say. This new generation is really much smarter than our generations or your generation. Okay, right? And maybe Sharvari, just give me a moment, okay? You can yes, talk. I'm just connecting myself to the charger, but you can keep talking. yes, Just give please. me a moment. Yeah. Okay. So because of this early exposure to all this information or all these mobile phones or your laptop or internet, okay, they are really bombarded with lots of information, right? And because of that, maybe their pituitary gland or brain is really developing very fast. See, this pituitary gland is nothing but the part of our brain. It is deep inside our brain, situated in that pituitary fossa, and she is under control of this brain only. Brain has this highest superior power in our body. Okay, so it controls everything. So once this brain starts developing fast, and we can see our generation, coming generation are really very smarter. So maybe because of this early exposure to all these things, their pituitary gland is also developing really very fast or some little bit in early stages. Okay, and because of this early development of pituitary gland, thus hormonal secretion starts. जो जनरली 12-13 में होने चाहिए, आइडियल एज फॉर गर्ल टू हैव दिस पीरियड इज अराउंड 12 और 13, राइट? लेकिन ये आजकल बहुत जल्दी हो रहा है, दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ दिस अर्ली एक्सपोजर टू ऑल दिस थिंग्स. The second thing is pollution. We can say that pollution is everywhere. Our food is not very clear, our water is not clear, there are multiple chemicals we are actually receiving from everywhere. Okay, हम जो श्वास लेते हैं वो भी क्लीन नहीं रहता है, पानी, फूड, एवरीथिंग इज सो पोल्यूटेड और सो केमिकल कंटामिनेटेड. Maybe that is the reason behind this menarche. The third thing, stress factor. Yes, we feel कि kids को कोई stress नहीं होता है, but nowadays every kid is under stress. Okay, उसको हर parents को अपने baby को super kid बनाना होता है, तो वो बहुत ज्यादा उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन देते रहते हैं. अर्ली एक्सपोजर टू मोबाइल, आई एम सेइंग दिस बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली लुकिंग एट दैट स्क्रीन. पिछले 2 साल से तो ये स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बराबर, तो उनको जो खेलना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, वो तो वो पढ़ नहीं रहे, बट कंटिन्यूअसली लुकिंग एट स्क्रीन. तो इससे क्या हो जाता है, वो जो लाइट कंटिन्यूअसली जाता है एंड kids are not sleeping early in the night, वो रात भर उनको टीवी लगता है. The melatonin secretion exactly also. Yes, after sunset there is a melatonin secretion from our gland. Okay, और वो होता नहीं है. This hormone is very important to give nice rest to your body. ये rest मिलती नहीं है and brain is almost every time it is working. Okay, तो ये brain को rest ना मिलने के कारण there is a massive development, or you can say some not so proper development is there in their brain. So that is why menarche is setting early in these small girls. Okay, तो जैसे आपको menarche जल्दी आ सकता है, वैसे ही आपको menopause जल्दी आ सकता है. Right. Okay, if the girl is getting early menarche, she is going to get menopause also at early age. अब इसका reason क्या है? We have particular number of eggs already placed in our ovary. Okay, when the girl child is born, okay, though her reproductive system is not so developed, but the number of eggs is already decided. how कितने eggs होने चाहिए उसके ovary में, वो number एक fix रहता है. Okay, so if you are ovulating, that eggs are coming out, तो उसका एक लाइफ स्पैन फिक्स है. इफ शी इज गेटिंग पीरियड एट 6 एज एंड देन शी वोंट बी हैविंग मेनोपॉज एट 55 एज, क्योंकि वो जो संख्या है, वो जो नंबर है एग्स का, वो एक स्टिपुलेटेड है. वी कैन नॉट इंक्रीज दैट नंबर ऑफ एग सेल्स इन आवर बॉडी. तो वो जल्दी अगर शुरू हो गया है उसका ओव्यूलेशन होना, मतलब वो जल्दी खत्म होने वाले हैं. सो दैट मे बी द रीजन ऑफ दिस अर्ली मेनोपॉज. अब मेनोपॉज अर्ली क्यों होता है? अगेन द सेम फैक्टर्स. द स्ट्रेस इज रियली वेरी
stronger day by day. Since last 2 years तो stress का जो level है वो सब में बढ़ गई है. Okay, so because of this stress, the egg cells which are there in ovaries, they are getting destructed by their own. Okay, so once these egg cells are finished, वो एक बार खत्म हो जाते हैं, you are going to get early menopause. So stress is really very very important factor behind this early menopause. Sometimes there is, so see, whenever we get this menopause in between 45 to 55, we call it as a natural or the normal menopause. Or if because of, if we are getting menopause early for around 35 age or 40 age, then we call it as some unnatural or the early menopause. So एक तो stress factor है. Sometimes there are other treatment is involved, जैसे कि unfortunately if that female is undergoing for some chemotherapy. Okay, so chemotherapy is really very bad for these egg cells. Okay, so egg cells can be easily destroyed, destructed because of this chemotherapy. So that may be the reason behind this early menopause. Sometimes there is just a heredity. बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपके माँ को, मासी को, आपके एल्डर सिस्टर को अर्ली मेनोपॉज आया है, तो there is a more chances that you are going to have early menopause. So sometimes heredity also plays role. But stress is most most common factor for all this. So I was reading about in the afternoon we discussed about how to evoke your divine feminine spirit, and there were some 8 things that she had listed. So the first thing that she said was do nothing. So do absolutely nothing too, because as women we are so into so many things. Now Yes. we are taking care of the kitchen, we are going to work, we are seeing to it that everything, the home is stocked up, we are taking care of the laundry, the kids, their exams, and all of that, that we just don't have any time for ourselves. And Right. and in because we want to be equal to men, so we are evoking the masculine power within us, and that somewhere takes a toll on our feminine energy as well. Exactly. So there is unnecessary pressure on these women nowadays, that society is also expecting that woman should be a superwoman. Yeah. And even we feel very good that whenever somebody says us, "Arey, you are like a superwoman, you are handling each and everything." But I feel that before being woman, we are human. Yeah. Okay, so try to behave like a human. जैसे सारे ह्यूमंस को थोड़ी रेस्ट की जरूरत होती है, कुछ मी टाइम की जरूरत रहती है, वैसे ही वुमेन को भी होती है. तो शी शुड एक्चुअली, यू आर वेरी राइट, दैट डू नथिंग. कभी एक दिन अपने लिए निकालो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो. ओके, जस्ट डू नथिंग. Correct. यस. So, okay, so we spoke elaborately, you spoke elaborately about this whole menopause. The symptoms that we spoke about, like hot flashes or weight gain or hair loss, does every woman experience these symptoms? या किसी women का एकदम smoothly हो जाता है menopause? ऐसे होता है कि people, I mean, women don't even know when they had their menopause, or really rare cases. Symptoms will be there, लेकिन किसी को कोई एक सिम्टम ज्यादा होगा, किसी को कोई दूसरा सिम्टम दिखेगा. मतलब किसी को शायद हेयर लॉस ज्यादा लगेगा, किसी को कुछ ऑस्टियोपोरोसिस या तो कुछ ऑस्टियोपिनिया, मतलब बोन्स में कुछ प्रॉब्लम होंगे, कोई सिंपल ड्राई स्किन से हैरान हो सकता है. तो symptoms will be there because this is a natural process. वो होने ही वाले. As your estrogen and progesterone is going down, you are going to see some symptoms. लेकिन yes, किसी के लिए ये काफी easy होता है कि हाँ थोड़े थोड़े आ गए. Some females are really so cool about it कि हाँ ये तो एजिंग है, सबको हुआ है, मुझे भी होने वाला है. तो उनके लिए ये मेनोपॉज काफी इजी हो जाता है. लेकिन कुछ फीमेल्स दे आर रियली वरीड अबाउट, और मे बी दे आर इन दैट फील्ड कि उनको अपना चेहरा, अपनी पर्सनालिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मीडिया में है या तो एंटरटेनमेंट में जो है, उनके लिए इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद ऑल दिस सिम्टम्स. लेकिन सिम्टम्स तो रहेंगे, लेकिन किसी को स्मूथ होगा, किसी को थोड़ा रफ हो सकता है. तो कोई सिम्टम्स ऐसे रहते हैं प्रिया कि दे आर रियली वेरी टफ टू handle, जैसे कि profuse bleeding around this menopause. Okay, the females bleed a lot sometimes कि उनको periods एक तो 2-3 महीने आते नहीं because of this simple irregularities, but जब भी periods आते हैं at that time there is a massive bleeding.
तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए. दे ब्लीड फॉर more than 10 days, 15 days, sometimes a month long their bleeding is going. So this is really very taxing for their mind also and for their body also. अगर इतना bleeding हो रहा है तो then there is a loss of important nutrients, जैसे कि iron loss हो जाता है, hemoglobin low हो जाता है. The female feel really very heat in her body because as per Ayurveda, Rakta, or we know that water, blood is one kind of tissue which provides water to our every cell. So she feel dehydrated, she feel very drowsy और एकदम थकान महसूस होती है, hemoglobin down हो जाता है. So all these changes or all these symptoms are really very difficult to manage. Okay, लेकिन of course Ayurveda has really very good option for that. Nowadays there are multiple treatment is also available in your allopathy also. With the help of yoga also we can manage all these symptoms, but sometimes the bleeding is really profuse. So as you say that for few females it is very difficult. एक ये bleeding का होता है, sometimes there is a severe osteoporosis. Okay, osteoporosis means your bones become really very fragile, brittle हो जाते हैं, उनमें literally porous हो जाते हैं, pores हो जाते हैं, holes हो जाते हैं, and because of that there is a tremendous joint pain is there, or sometimes there is a fracture की possibilities बढ़ जाती है. ये एक change रहता है. या तो simply hot flushes बहुत ज्यादा हो जाते, इतने हो जाते कि उनको daily रूटीन कैरी आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो ऐसे ऐसे किसी किसी फीमेल्स में ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं. अगर अभी ये भी है कि XYZ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम दोज सिम्टम्स, तो ABCD भी सफर करेगी, तो ऐसे नहीं होता है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आपने पहले आपके बॉडी को कैसे ट्रीट किया है. आई ऑलवेज से okay, one of my patient who is suffering from this menopausal symptoms, that she is bleeding profusely now, and she always says कि मैडम पहले कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे पीरियड्स वेरी रेगुलर थे, 3-4 दिन में अपने आप रुक जाते थे और मैं इतना काम करती थी, ये अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है. तो इफ यू टेक हिस्ट्री ऑफ दैट फीमेल, शी इज अ कुक. ओके, वो घर घर पे जाके खाना बनाती है और वो इसका काम सुबह से, सुबह वो अपने घर से टिफिन देती है एंड फिर वो पूरा दिन लोगों के घरों पे जाके खाना बनाती है. शी इज अ कुक लाइक दैट. तो आप देखो अभी उसका काम ही है कि वो अग्नि के नजदीक रह रही है, दिन के 14 से 15 घंटे शी इज जस्ट क्लोज टू दैट फायर थिंग. ओके, तो मतलब पूरे साल, पिछले 35 साल से वो एक काम कर रही है. सो हर बॉडी इज कंटिन्यूअसली टेकिंग दैट हीट. ओके, अब तक उसके बॉडी ने नहीं दिखाया क्योंकि बॉडी चांस देख रही थी कि कब मुझे चांस मिले और मैं ये हीट को बाहर निकालूं. एंड नाउ दिस मेनोपॉज इज द आइडियल एज कि अब उसकी बॉडी थोड़ी वीक हो गई है, तो आ गए ये सिम्टम्स बाहर. तो आपने, जब आपको मेनोपॉज नहीं था, तब आपने आपके बॉडी को कैसे ट्रीट किया है, वो डिपेंड करता है कि आप मेनोपॉज कैसे, अब वो मेनोपॉज आपको कैसे ट्रीट करेगा. ओके, so that is why you should take care of your body before menopause, right? That is why this perimenopausal age is there. The nature is trying to tell you कि भाई अब तुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है. I am giving you this much of span, 10 years का, 8 to 10 years का span में दे रहा हूँ, तो अब कुछ स्टार्ट करो अपने लिए सोचना शुरू कर दो. Okay, so if you don't want all these severe symptoms of menopause, you should start or you should make some lifestyle changes, okay, during this perimenopausal age only, right? प्यास लगने के बाद कुआं खोदने से अच्छा है आप पहले से कुआं खोद के रखें. Okay, so you should start your all these practices, whatever is mentioned in Ayurveda, or lifestyle changes, or whatever the yoga practices, or just like as you said that do nothing. मेनोपॉज आने के बाद मत करो भाई, ये पहले से स्टार्ट करो. Because today somebody sent me this very nice thing that Geeta Iyengar had said, Dr. Geeta Iyengar, Guruji's daughter. She said that whenever you are anxious, the uterus becomes very, it contracts. Yes. And that is the reason why we get these hot flashes, probably irritation. But when we are happy and relaxed, the uterus is also relaxed. Exactly. And that is probably why, and this applies to every phase of our life, whether it's menstruation, whether it's pregnancy, whether it is menopause. I think our state of mind has a direct impact on our organs, whether it is uterus or
stomach Yes, or yes. anything else. Always remember, all your organs are under your control, under your mind control, your brain control. So how you are dealing with your mind, that shows that how you are dealing with your body. Correct. Okay, so mental control or emotional control is very, very important to manage all this menopause. Right, right. Yes. So coming to lifestyle changes, what are, I mean, apart from rest and relaxation and good sleep, any foods that you would recommend? I mean, as per Ayurveda, what is it that we need to eat? Or is it based on your prakriti, or is it like a generic uh, food list that we need to keep in mind? Yes. See, Ayurveda is basically the Ved, or the this is like the study or the knowledge of Ayu, okay, or the life, right? So that is why Ayurveda basically is mainly for the prevention and after the curing. The first aim of Ayurveda is to prevent everything. So for prevention of all these severe symptoms of menopause, see, we are not going to prevent menopause because it should be there. It is the natural thing. What we want to do, that we want to manage this menopause really very well. And as I told you, that you cannot go for lifestyle changes once you achieve or once you entered into this menopause age. So you have to start all these changes. Actually you should start it as early as possible, but if not, at least start after your 35 age. Okay, तो क्या changes करने चाहिए? तो सबसे पहले, सी, ड्यूरिंग मेनापोज क्या होता है, आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये कम हो जाते हैं, एंड ऑल दिस सिम्टम्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द लो estrogen in your body. See, why we are so beautiful, why our skin is so glowy and so soft, why we have this very nice texture of your hair, that is all because of estrogen. ओके, और ये एस्ट्रोजन ही कम हो रहा है, तो ये सब तो चेंजेस होने ही वाले हैं. अब इफ यू कंसिडर आयुर्वेद, आयुर्वेद सेज दैट देयर आर 7 टिश्यूज और द 7 टाइप्स ऑफ धातुज इन अवर बॉडी. ओके, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र. Okay, so as and all our body is made up of all these 7 types of dhatus. Okay, so rasa dhatu is the very first thing which is getting produced in our body once you have this food. Okay, after food there is a first conversion is of rasa, रस धातु. ओके, और रस से फिर आगे जाके ये धातुओं की उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन होता है. रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, एंड मज्जा से देन शुक्र. Okay, shukra is the that form. Shukra, you can say, just to understand what is this shukra, there is only one example which is really very appropriate over here. The ovum in female body and the sperm in male body is can be considered as shukra. Okay, of course shukra has this vast understanding, but here let us take that ovum in female and sperm in male, that is called as shukra. So once your rasa dhatu is perfect, okay, all your dhatus are going to be perfect. Okay, right. Now also this shukra is their ovum, but also considered as ovum, but this ovum is also called as upadhatu of your rasa dhatu. Okay, which is called as raja. Whatever we menstruate, that bleeding which is coming out from our body, this is called as raja as per Ayurveda, and it is a upadhatu or the sub tissues of this rasa dhatu. Okay, right? So यहाँ पर क्या होता है ना, because of our aging, your rasa dhatu is not getting formed properly, and because of that there is no formation of raja. So raja means आपका bleeding धीरे धीरे से कम हो जाता है, and since rasa is not getting formed properly, all your eventually all these dhatus थोड़े थोड़े changes दिखाई देने शुरू होते हैं, right? So since there is no rasa, not proper development of rasa, there is no raja, so we bleed really very scanty bleeding शुरू हो जाता है. ओके, रक्त कम हो जाता है, बिकॉज रस के बाद ही रक्त की उत्पत्ति होती है. सो मेनी फीमेल्स दे फील दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और रक्त धातु कम हो जाता है. Also they feel that their all muscles are becoming really very weak. Why? Because rasa is not getting formed. मेद का यहाँ पर थोड़ा सा many times the fat deposition ज्यादा होता है. I'll tell you what is the reason behind this fat deposition. The metabolic rate decreases suddenly. Okay, so because of this hormonal imbalance और रस उत्पत्ति नहीं हो रही है, so there is no proper digestion in your body, so that is why metabolic rate goes down. Okay, so मेद की उत्पत्ति ठीक से होती नहीं है,
and after that अस्थि, the bones are becoming really very brittle, porous ho jate, so that is why there are multiple bone issues in our body. Majja is actually related to your brain and spinal cord, related to your nervous system. So around menopause we have this irritation. Okay, sometimes there is a brain fog. Many female, they start forgetting the things. अरे मैंने ये कहाँ रखा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने चाय में शक्कर डाली के नहीं. So all these symptoms are related to your Majja. See, means Majja Dhatu is far away from your Rasa Dhatu, but also it is getting disturbed because of Rasa Dhatu. And finally, Shukra, there is no formation of hormone. Okay, since there is no Shukra, Shukra Dhatu is responsible for all our love, affection. Okay, और exactly अगर exact manifestation चाहिए तो this libido, what is there, that is the sexual drive. तो ये सब धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाता है. ओके, राइट. सो जस्ट टू अवॉइड दैट, व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन दिस रस धातु. ओके, तो रस धातु शरीर में बढ़ेंगे, ऐसे कुछ आहार द्रव्यों का या तो ऐसे फूड का हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए. सो रस धातु इज नथिंग बट द फ्लूइड इन योर बॉडी. छोटा सा अगर एग्जाम्पल देते हैं तो यू हैव टू ईट मैक्सिमम फ्लूइड थिंग, जैसे कि सूप्स है या तो कुछ पॉरेज है. ओके, डोंट गो आफ्टर दिस वेरी हार्ड फूड कि आप मैदा वगैरह खा रहे हो, ड्राई फूड खा रहे हो. सो अवॉइड दैट ड्राई फूड. Try to have garam garam and homemade food. That is the very first thing, because many females, this generally housewives, they have this tendency कि कल का जो बचा है ना वही खा लेते हैं. ओके, फ्रीज में रखा हुआ कल वाला कैसे बच्चों को दे, कैसे हस्बैंड को दे, लेकिन वो वेस्ट भी तो नहीं कर सकते, चलो खा लिया. सो ऑल दिस स्टेल फूड इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द प्रॉपर रस धातु उत्पत्ति इन योर बॉडी. सो ये जो सब त्याग वगैरह बनाया है आपने, लोगों ने, सोसाइटी ने बोला है कि फीमेल बहुत एक त्याग की महान मूर्ति वगैरह होती, तो ये त्याग व्याग मत कीजिए, अपने बॉडी को भी अच्छा अच्छा खाना दें. I think it is also dead food. I mean, first of all, that Yes. we eat cooked food and don't consume it for like in less than 3 hours is one thing. So Yes. wo hum already, but that we don't have a choice sometimes because people have started going to work now. Yes, So exactly. So there you we can don't have a keep, choice, but at yes, least we can avoid eating in the evening what we cooked in the yeah, morning. at least try to avoid that overnight or whatever the leftover food which is there in your fridge since last 4 days 5 days. Overnight जो food रहता है ना, that is actually called as a stale food as per Ayurveda. Okay, क्योंकि उस वक्त already sunset हो चुका होता है, and whenever there is a sunset there is a massive production of all these bacteria or unwanted viruses are there. Okay, so at least try to avoid this overnight food or stale food, कल का बचा हुआ rice, और जनरली ये सब फीमेल्स के ही पेट में जाता है. तो इससे क्या हो जाता है, शरीर में टॉक्सिन्स निर्माण हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज आर्मर विश. ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स आर फाइनली गोइंग टू ट्रबल यू ड्यूरिंग योर मेनोपॉज, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी की जो जनरल पावर रहती है वो काफी कम हो जाती है, और फिर सारे ये जो ऐसी चीजें रहती है वो सर उठाना शुरू कर देते हैं. तो सबसे पहले ट्राई टू ईट दैट होममेड कुक्ड हो, फ्रेशली कुक्ड फूड, गरम गरम खाना जितना हो सके उतना कर लीजिए. आप अगर ऑफिस में हो तो उतना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि फीमेल लोगों को देती है, घर वालों को देती है, खुद नहीं खाती है. आई एम ऑब्जेक्टिंग फॉर दैट पॉइंट. ओके, तो ये पहले कर लीजिए. Okay, then there are many things which is really very important or can be beneficial to increase this rasa dhatu. तो एक छोटा सा एक दो चीजें मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी जरूर. ओके, एक तो ये जो ऐसी सब्जियां रहती है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है. ओके, एंड आइडियली दीज सब्जियां और दीज वेजिटेबल्स आर नॉट सो प्रिफर्ड इन आवर हाउसेस. आई डोंट नो व्हाई. ओके, मराठी में नाम जिसको बोलते हैं शिराळी. ओके, और दिस हाँ, उसको क्या कहते हैं, गार्ड विच लॉन्ग लॉन्ग रहते, शिराळी मराठीत बोलतात त्याला, गलका बोलते हैं. Rich God. हाँ, yes, rich god, right? So that फिर घोसाड़ी, it is the sibling of this rich god, right? All the gods basically. Yes, all the god. दूधी है, right? फिर pumpkin है, right? The orange pumpkin एक जो रहता है, yellow pumpkin, orange pumpkin, और उसी के साथ जो white pumpkin मिलता है जिसको मराठी में कोहड़ा बोलते हैं, और जिसको स्पेसिफिकली हैलोवीन के वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में बाहर लगाया जाता है. These are really very super food, you know.
just to maintain the proper estrogen level in our body. So these are really very good food for females. उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ऑलवेज रिमेम्बर जिसमें ज्यादा वाटर कंटेंट रहता है वो रस धातु को बहुत अच्छे से निर्माण करता है. सो आई वोंट से कि दैट यू शुड नॉट गो आफ्टर ऑल अदर फूड, लेकिन इन चीजों का भी अपने आहार में, आपके फूड में जरूर इंक्लूड कर दीजिए. आप भी खाइए, आपके बच्चों को भी खिलाइए. और जनरली पता नहीं ये सारी सब्जियां लोगों को नहीं अच्छी लगती. दूधी की सब्जी, ओ माय गॉड, ओके, गलके की सब्जी, ओ नो नो नो, ये तो घर पे खाते ही नहीं है. बट दीज थिंग्स आर रियली वेरी गुड. ओके, द सेकंड थिंग, पानी, वाटर कंटेंट तो होना ही चाहिए ऑफ कोर्स. जो आइडियल वाटर आपके आपके लाइफस्टाइल के साथ है, आपके जैसे आप काम कर रहे हो, और इफ यू आर सिटिंग इन रियली वेरी हॉट प्लेस तो वाटर कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए. बट सिंस यू आर सिटिंग इन एयर कंडीशन एंड देन हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर, दैट शुड नॉट बी देयर. ओके, एंड वाटर कंजम्पशन एज पर योर क्लाइमेट ऑल्सो, सो सीजन के साथ होना चाहिए. Then the second thing I want to press here, that include maximum amount of ghee in your food. Okay, आप बोलोगे कि एक तरफ आप बोल रहे हो फैट ज्यादा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, और ऊपर से बोल रहे हो कि घी को खाया कीजिए. तो एक तो सबसे पहले बताऊंगी कि घी मतलब ये जो आप बाहर से जो घी कोई भी मिलता है, बहुत अलग अलग ब्रांड्स के घी आर अवेलेबल इन मार्केट. बट मैं हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि घी आपको घर पे बनाना चाहिए. ओके, आप बोलोगे इतना टाइम कहाँ है. एक्चुअली इतना कुछ बहुत अलग से टाइम लगता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है. आपको ध्यान से वो कर देखना पड़ता है कि आप घी कैसे बना रहे हो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट घी शुड बी होममेड घी, बिकॉज बाहर का घी उस प्रोसेस से बनता नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इफ टाइम परमिट्स, हम घी कैसे बनाते हैं उसकी भी मैं प्रोसेस बता सकती हूँ. लेकिन ये घी इसी प्रोसेस से अगर बनता है तो ही वो अच्छे से इफेक्ट देता है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, सो घी इज रियली वेरी गुड टू इंक्रीज रस धातु इन योर बॉडी. ओके, रस धातु का काम ही है कि वो स्नेह प्रदान करता है. व्हाट इज दिस स्नेह? in general language it is lubrication. Okay, but if you consider this sneha एक प्रेम के लिए, प्यार के लिए भी सिनोनिम है, राइट? कि मराठी में, संस्कृत में स्नेह वर्ड प्रेम के लिए बताया जाता है. एंड इफ यू सी ऑल दिस मेनोपॉजल सिम्टम्स, वहां पर स्नेह कम हो जाता है. ओके, राइट? दैट लेडी फील्स इरिटेटेड, उसको वो जो अटैचमेंट रहती है, वो जो प्यार रहता है, वो किसी के लिए होता नहीं है. शी सडनली फील्स अलूफ, she feels depressed. Okay, तो उसको सडनली लगता है ये सब बेकार है, मुझे इसमें किसी में रहना नहीं है चाहिए. तो ये स्नेह कम हो जाता है. एंड दिस स्नेह कैन बी मेंटेन्ड रियली वेरी वेल विद द स्नेह दैट इज घी. ओके, अब ये हो गया रस के साथ. नाउ it is scientifically proved that ghee has phytoestrogen in it. Okay, right? The estrogen in our body which is produced by this ovum, this is little different than this phytoestrogen. लेकिन ये phytoestrogen हमारा जो ओरिजिनल एस्ट्रोजन है, जो ओवरी से आता है, उसको अप टू सर्टेन एक्सटेंट बैलेंस करने का ट्राई करता है. So if you don't want any this severe menopausal symptoms, try to include ghee in your daily food. आप वो रोटी में, भाकरी में डाल के खा सकते हैं, या तो आपके राइस पे डाल के साथ खा सकते हैं. घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन इज एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन टू मेंटेन योर हीमोग्लोबिन लेवल. Okay, and ghee is very important for your hormonal balance. Okay, there are many other vitamins also, they get dissolved in fat only. So ghee is a very good source of this natural and normal fat, which is really very essential for the hormonal balance. Okay, one more thing I will like to add over here. ज्येष्ठ मध, जिसको मराठी में बोलते हैं मुलेठी, जिसको हिंदी या गुजराती में, और गुजराती में जेठी मध बोलते हैं, संस्कृत में यष्टि मधु बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो रियली वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन. ओके, तो अगर आप वो इंक्लूड करते हैं, दिस इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट. ग्रोसरी शॉप में भी ये इसकी पाउडर मिलती है, स्वीट इन टेस्ट रहती है. ये बहुत अच्छे से एस्ट्रोजन को बढ़ा सकती है. तो इसको आपको क्या करना है, इफ यू आर फेसिंग ऑल दिस मेनोपॉजल प्रॉब्लम और मेनोपॉजल सिम्टम्स, जैसे कि हॉट फ्लैशेस है, या तो आपके हेयर लॉस बहुत हो रहा है, या तो आपको बहुत ज्यादा हीट महसूस हो रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है. ओके, आप ये जरूर खाना शुरू कर दीजिए. 1 ग्राम ऑफ दिस पाउडर, जेष्ठिमध पाउडर, एडेड टू घी, उसका चाटन बना के फर्स्ट इन द मॉर्निंग आप ले सकते हो. That can maintain your estrogen level really very well.
You should make you should make Instagram posts about these things now. Definitely. Yeah, because So these are things that we don't know. Like if we Google, we get a list, but yes, these are ingredients that Google will not tell. right. So it is. And one more, that till is also there. This can provide phytoestrogen. तिल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, sesame, that is white तिल और black तिल, वो किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हो. बट एक बात याद रखना है कि जिनकी ऑलरेडी हीट या पित्त की प्रकृति है, हॉट टेंडेंसी है, उनको ये तिल थोड़े कम खाने हैं, क्योंकि ये तिल जो रहते हैं वो पर्टिकुलरली हॉट टेंडेंसी वाले होते हैं. तो आपको उसको थोड़ी मात्रा में खाना है, जैसे कि आप उसमें ठेपला में डाल सकते हो, या किसी सब्जी में आप उस पे ऐड करते हो, सिंपल तड़का डालते हो तो उसमें आप डाल सकते हो. काले तिल की चिक्की भी मिलती है, लेकिन चिक्की बहुत बार ज्यादा क्वांटिटी में तिल जाता है, तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है. तो द फीमेल हु इज हैविंग लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग देयर मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल एरिया, उनको ये तिल थोड़े कम खाने चाहिए. लेकिन बाकी जिनको हॉट फ्लैशेस वगैरह हो रहे हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम लग रहा है, स्किन बहुत ड्राइनेस अगर ड्राई लग रही है, तो उन लोग ये जरूर तिल का प्रयोग कर सकते हैं. Okay. All right. Yes. All right. So more or less we have covered everything. Yes. One last question was any tests that a woman needs to do after menopause, or just to apart from the regular tests that she does, are there any tests that she needs to do regularly? How can she take care of herself after the menopause? Definitely. Okay. See, all these tests should be done right from the age of 40. Okay. And I would like to recommend all these tests once in a year. If you are only 40, less than 45, so once in a year is, once in a 2 years is also fine. Okay. But minimum once in a year hona chahiye. Okay. And what these tests are there? The very first thing that you should keep watch on your sugar, blood sugar, right? You should keep checking your sugar once in a year at least. If you have any family history of diabetes, or if you have experienced gestational diabetes, that means diabetes during pregnancy, then you should be really very careful about this blood sugar. So you should check it once in a 6 months. So I would like to recommend for that. So blood sugar बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है. And second thing is your lipid profile. Lipids means your cholesterol and triglyceride. होता क्या है, because of estrogen and progesterone in our body, they take really very good care of all these things. Okay, they take good care of our heart, they take good care of our bones, hair and everything. But once this estrogen progesterone is gone, there is no cover for everything. Okay, और suddenly since this is the hormonal imbalance, पहले वो hormones बहुत अच्छे से आपको कम हो गए, and all our diabetes is also one kind of hormonal imbalance where insulin is not getting secreted. Okay, तो ये सारे जो changes है वो suddenly आ सकते हैं पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल की एज में. तो शुगर को चेक करना बहुत जरूरी है, लिपिड्स को चेक करना बहुत जरूरी है. थायराइड प्रोफाइल इज आल्सो नेसेसरी, क्योंकि many females they suddenly start suffering from this hypothyroidism, okay, around their perimenopausal or menopausal area, क्योंकि ये सारा हार्मोन का खेल है. Pituitary gland is giving some signals and all our other glands are reacting those. So thyroid is one gland which is also reacting or giving response to your pituitary gland. Your ovaries are second one, they are giving response to your pituitary gland. So ये जो HPO axis है, hypothalamus pituitary organ axis, ये कहीं ना कहीं पे imbalance हो जाता है. So you should be careful about these hormonal changes in your body. So sugar, lipids and thyroids. Okay. The one more thing I would like to suggest, कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि तो वो थोड़ा सा बोन डेंसिटी की तरफ भी ध्यान दे. once in a year they should check this bone density, कि अगर ये ऐसा हो, अगर हमें पहले से समझ में आ रहा है, तो we can start immediately start calcium, vitamin D supplement, something like that. Okay, and again very important, we should be really very careful about this cancer thing also, because all these cancers they start growing in female body around this perimenopausal, especially menopausal age. So the very first thing which is very common cancer in females, that is breast cancer. And nowadays somehow this incidences of breast cancer is they're increasing like anything. Okay, so you should check your breast
by yourself monthly after your periods. Okay, so self breast check is very, very important. Those females who are already entered into perimenopausal. So I'm just talking about the 48 से ही आपके breast को check करना शुरू कर दीजिए. मैं तो कहूंगी that every female should check their own breast after their periods. Once this periods gone, you stop your bleeding, फिर आप breast check कीजिए, क्योंकि before periods कभी कभी ब्रेस्ट में अननेसेसरीली टाइटनेस या तो कुछ लंपी फीलिंग आ सकता है, बट दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स थिंग. So you should check your breast once your bleeding stop. Okay, so that may be around 4th or 5th day. तो अपना self check करना शुरू कर दीजिए. सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ योर ब्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो तो वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सकता है. Early detection can be done, and that is again very easily. You don't need any sonography, you don't need any mammography, just your palms. Okay, so जितना early diagnosis होता है breast cancer का, उतना उसकी जल्दी treatment होती है. Though the breast cancer is very common, एक गुड न्यूज ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रोग्नोसिस है, मतलब उसकी जो ठीक होने के चांसेस रहते हैं, रेट रहता है, वो किसी भी बाकी के कैंसर से सबसे ज्यादा है. ओके, सो दैट इज काइंड ऑफ गुड न्यूज. तो जितना अर्ली डायग्नोसिस होता है उतना आप जल्दी इस डिसीज से बाहर भी आ सकते हो. उसका जो फैलाव है जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं, वी कैन अवॉइड दैट थिंग आल्सो. द सेकंड थिंग, यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल अबाउट योर सर्वाइकल कैंसर. ओके, the cervical cancer, cervix is the opening of your uterus, or you can say it is the mouth of your uterus. Okay, this cervical cancer is also very common. उसके लिए एक सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट रहती है, काफी इकोनॉमिक भी रहती है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते और बहुत आपके गायनेकोलॉजिस्ट ये टेस्ट कर सकता है. तो इट इज रियली वेरी कंफर्टेबल, इट इज कंप्लीटली पेनलेस टेस्ट. ओके, तो once in a year go for this pap smear test also, just to know, or just to early detection of cervical cancer. Apart from that, if you are feeling any changes or any typical changes in your bleeding, जैसे कि चलो थोड़ा थोड़ा bleeding कम होना is very normal around this perimenopause, but you have already achieved menopause. Okay, आपको 12 महीने हो गए हैं menopause आके, last period आके, and again you are bleeding, तो जरूर इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ यूटेराइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर. तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं होने चाहिए. इन मेनोपॉजल थिंग्स, पेरीमेनोपॉजल थिंग, या तो कभी कभी लोग निग्लेक्ट करते हैं कि अरे ये तो होना ही है, बराबर है, ये तो होना ही है, लेकिन लेट योर डॉक्टर चेक दिस, एंड इफ योर डॉक्टर टेल दिस दैट यस ये तो होना ही है और ये होता है. ओके, Okay. यस. Yes, I think that was a great deal of information. And I think every woman needs to listen to this talk. So I'm definitely going to post it on YouTube and promote it. But it was a very clear conversation, so long one, but I think this needs to go on YouTube. So I'm kind of glad that the tech connection was disrupted. So I'm going to stop the recording now. And thank you so much, Sharvari, once again. Let me just stop this recording.